Hello friends, this is Khemchandra Patil. Welcome you all in UPSC Deep Samba online seminar. Here today we are going to discuss a very important topic of UPSC prelims exam, that is paper 2, which is CSAT. In the long form of CSAT, all of you know, that is Civil Services Aptitude Test. This paper plays a very important role in your selection process. Though UPSC kept this paper in a qualifying mode. What it means, that we try to understand this first. As far as your prelims exam in UPSC is concerned, there are two papers conducted by this body, and the first paper is GS, which carries 200 marks, and second paper is CSAT, that is Civil Services Aptitude Test, which also carries 200 marks. 80 questions are there which carries 200 marks, but this paper is in qualifying mode. What do you mean by qualifying mode? Qualifying mode, it means that you have to pass this particular paper. At least you require 33.33% to pass this paper. Means out of 200 marks, at least you require 67 marks to qualify this particular paper. Means if you qualify this paper, then and then your GS paper will be checked. So this paper is very crucial when it comes to the selection as far as your mains exam is concerned. And today, my dear friends, we are going to discuss what are the strategies and what are the plannings you require, what are the basic preparation you require to crack this particular paper, that is CSAT. Scoring 67 marks, sometimes it becomes very difficult, and though you are good in GS, but if you are not able to crack this CSAT, you will not get qualified for the mains exam. So we don't have to underestimate the importance of this CSAT paper. Though it is in a qualifying mode, it has its own importance. Then see, that's why here we are going to discuss very important points related to this paper, जो आपको इस पेपर में 67 मार्क्स लाने के लिए हेल्प कर सकता है. So let us start, my dear friends. Before starting, I request everyone to keep your paper and pencil ready with you, so that if some important points are there, so I request all of you to take the note down of those important points, because those are going to help you in your preparation. So चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि what are the plannings we required for this CSAT paper. Before going to the further part of this session, let us discuss the syllabus of this CSAT paper. As far as syllabus of this paper is concerned, there are 7 points are given in the syllabus. The first point is comprehension. Comprehension, there means unseen paragraphs are given, and on that particular paragraphs 1 or 2 questions are asked on that particular paragraphs, जिसके आपको answer देने पड़ते हैं. Those answers are in the context of that particular paragraphs. So this is the first part. Then second part is interpersonal skills, including communication skills. Third is logical reasoning and analytical ability, decision making power and problem solving, general mental ability, basic numeracy, data interpretation and comprehension skills. So this is the syllabus of UPSC CSAT exam. Means as far as this exam is concerned, we can precisely say that this exam is having 4 sections, and those 4 sections are: first section is logical reasoning. Based on the last year exam or question paper, we concluded this exam comprises 4 patterns or the 4 sections. First is the logical reasoning. There are 20 to 24 questions which are asked on the logical reasoning, which includes analytical reasoning and general mental ability also. Second, basic numeracy. As far as last year paper is concerned, there are 30 to 34 questions are likely to be asked on the basic numeracy. And as far as basic numeracy is concerned, here your maths and geometry up to 10th class skills are to be checked. So everyone up to 10th class are having the same syllabus as far as your maths is concerned. So this UPSC exam is going to test your mathematical numerical skill up to 10th class. Okay. Then comprehension and decision making collectively has means there are 22 questions. So ये roughly आपका पेपर का एनालिसिस है based on the last year के पेपर्स पे से हमने ये निकाला हुआ है कि रीजनिंग के लिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
क्वांट के लिए किसने क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट इज नथिंग बट न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रेंशन पे और डिसीजन मेकिंग पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सीसैट एग्जाम, सो 34 क्वेश्चंस आर ऑन basic numeracy. So if your mathematical skills are good, there is no need to prepare for any another section, that is logical reasoning and comprehension, because to score 67 marks, that is 33%, 33.33%, you require to get 31 questions correct approximately. 31 questions आपके correct आ गए तो आपका इतना score तो आ जाता है। Having said that, there are negative marking system is also, so you have to focus on your accuracy level. जितना आप ज्यादा accurate रहोगे, आप maths में ही आप निकाल सकते हो। Suppose if you are not good at maths, तो डरने की बात नहीं है। If you are not good at maths, there are logical reasoning, comprehension and decision making questions. So if we collectively take that pool, 24 and 22, 46 questions are asked on logical reasoning, decision making and comprehension, which does not require too many math skill. Simple addition, subtraction भी आपको पता है तो बहुत होता है इस questions को solve करने के लिए। So आपको maths का core knowledge होना जरूरी है, ऐसा कोई नहीं है। Instead of, means in spite of having fear about maths, still you can score गुड इन सीसैट। वो कैसे, हम कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस देख के उसका अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप जब दे रहे हो तो देयर आर 2-3 फैक्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर और व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू have a practice of managing your time in a very effective way so that you can solve maximum questions in minimum time, और जो भी टाइम आपका बचता है वो बचे हुए टाइम में आप difficult questions भी solve कर सकते हैं। So here in this particular seminar and in after this seminar the batch which we are going to conduct, we are going to give you that skill sets by which you can save your maximum time and you can able to solve the maximum questions। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कब करोगे, जब आप कुछ टाइम बचा पाओगे, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज नॉट हैविंग द सेम डिफिकल्टी लेवल। दिस क्वेश्चन पेपर इज अ मिक्सचर ऑफ moderate, simple and difficult questions. So we have to manage our time in such a fashion that we can save some of our time on the simple question and we can able to allot it to the difficult question. That time approach, time management is very important. Second thing, accuracy is very important. So speed and accuracy should go hand in hand. क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी लेवल नहीं है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो निगेटिव मार्किंग हैमर करेगा और आपका जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्यूरेसी लेवल। आपने अगर 45 क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए, एक्यूरेसी लेवल आपका अगर 90-95% है, यू कैन एबल टू इजीली अचीव दिस टारगेट ऑफ 33.33%। टू बी ऑन द सेफर साइड, इफ यू एबल टू स्कोर 100 मार्क्स इन दिस सीसैट, देन देयर इज नो नीड टू मींस डरने की बात नहीं है, आप डेफिनेटली आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको कंफर्ट जोन अगर चाहिए तो 67 इतना टारगेट न रखते हुए आप 100 का टारगेट रखो, जिसके लिए आपको 40-45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की, एक्यूरेटली सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पेपर कंप्रेhension प्लेज अगेन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट कंप्रेhension। तो कंप्रेhension और कंप्रेhension का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? व्हाट इज कंप्रेhension? From our school days, from 7th standard to our graduation level, we used to read some passage. हमारे करिकुलम में हमने देखा है कि हमारे लैंग्वेज के जो भी पेपर्स होते थे वहां पे हमें कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते थे और पैराग्राफ्स पढ़ के हमें उस पे से कोई क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते थे। सेम पैटर्न इज यूज्ड हियर इन कंप्रेhension, बट देयर इज अ difference of difficulty level. As far as our school level is concerned, these paragraphs are related to some stories or some stories in our textbook only. But when it comes to the UPSC CSAT, comprehension में जो आपको paragraphs आएंगे वो different sector और different department से related होंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों की मालूमात होने जरूरी है, because these passages are unseen passages. And what should be the preparation strategy for this
unseen passages then. Comprehension को अगर आपको अच्छी तरह से स्कोर करना है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपको 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना है, तो आई विल गिव यू द गोल्डन की फॉर सॉल्विंग द comprehension question, that is reading and reading. So this is the golden key as far as the comprehension is concerned. जितना आप आपके रीडिंग स्किल्स डेवलप कर पाओगे उतना आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छी तरह से आपके मार्क्स आ सकते हैं, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग एंड रीडिंग इज अ शॉर्टकट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको अगला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो रीडिंग कहां से करना? तो एज फार एज अवर लास्ट एक्सपीरियंस आर कंसर्न, पैराग्राफ्स जो पूछे जाते हैं, दोज पैराग्राफ्स आर मोस्टली फ्रॉम the Hindu and the Indian Express editorial page. So I request everyone to read the editorial page of these dailies newspapers. Okay, if you read the new editorial page of this particular papers, then what you will find, initially you will find it difficult to understand the language of that editorial page, बट आपने पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंटली अगर आप ये करते रहो तो आपको कुछ दिन के बाद आपके रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, और जैसे आप रीड कर रहे हो तो उसका समझने की भी शुरुआत आपकी होते जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थॉट। आप अगर ये कंसिस्टेंटली अगर आप करते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने वाला है। डेली एक एडिटोरियल पेज पढ़ के उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने की आदत अगर आपने डाल दी तो ये 22 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कंप्रहेंशन पे, उसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। सो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस dailies, the Hindu and Indian Express. Again, when you are reading this editorial page, there are the means different section, different departments और different thoughts पे यहाँ पे editorial page पे लिखा जाता है, जिसका आपको current अफेयर्स के लिए भी आपका जीएस का जो पेपर होता है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस वेरी सिंसियरली एंड हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स आउट ऑफ दिस रीडिंग। सो अगर वाइज मैन वंस सेड दैट कंटिन्यूएशन इज अ मदर ऑफ मास्टरी, अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहे तो आपको एहसास होगा कि कुछ दिन के बाद आपका रीडिंग का स्पीड भी बढ़ा है, और जैसे आप रीड कर रहे हो वो आप समझने भी का प्रोसेस भी आप शुरू आपका हो गया है। The next topic which is very important in this particular paper, that is logical reasoning and general mental ability. Now my dear friends, if you are already prepared for MTS, NTS scholarship and different competitive exams at your school level, you must have come across this particular topic, general mental ability and intelligence test. This topic means, see, there are some basic skills you require to solve the questions on this particular section. That means you must know the tables up to 1 to 30. Now this sounds very childish कि ग्रेजुएशन के बाद हम यूपीएससी जैसा एक प्रेस्टिजियस एग्जाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हम टेबल्स के क्यों करें, तो ये मन में प्रश्न आने का बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सी as far as all competitive exams are concerned, you are not supposed to use the calculator for doing calculations. और कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है और आपको कैलकुलेशंस करना है तो आपको टेबल्स ही हेल्प करने वाला है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर टू ऑपरेशंस व्हिच आर टोटली बेस्ड ऑन टेबल्स. सो टेबल्स विल गिव यू द हेल्पिंग हैंड, जिसमें आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और आपके कैलकुलेशंस का जो स्पीड है वो भी बढ़ सकता है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सो व्हाटएवर स्पेयर टाइम you are getting out of your day, you utilize it for mugging up the tables up to 30. Second important point, you must know the squares up to 30. 1 to 30 के squares आपके learn होने ही चाहिए. Suddenly someone asks you the square of 25, you immediately come up with the answer that 625. जैसे आप 25 का स्क्वायर 625 बोलते हो, उतने फ्लुएंटली, उतने एलिगेंटली आपको 29 का भी स्क्वायर आना चाहिए, 19 का भी स्क्वायर आना चाहिए. उसके लिए आप उस पे काम करो, बिकॉज देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन नंबर सीरीज एंड नंबर पजल व्हिच आर टोटली बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. सो माय नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज टू लर्न और मग अप द क्यूब्स अप टू 15 एट लीस्ट. 30 तक करते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 तक के क्यूब्स आपको पता होने जरूरी है. डिविजिबिलिटी रूल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज नंबर सिस्टम इज कंसर्न. डिविजिबिलिटी रूल्स आपके 1 to 15 तो आपको पता होने चाहिए. यू शुड नो द रूल्स, यू शुड हैव वर्क मींस देयर एप्लीकेशंस. तो
तो आपको पता होने चाहिए। मींस अगर आपको 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो यू कैन हैव अ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी नंबर। वो कैसे, हम बेसिक न्यूमरेसी का सेक्शन जब डिस्कस करेंगे उसमें हम उस पे से हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। Now my next request is to mug up the numbers of alphabets of English language 1 to A to Z। ये 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स है, इनके नंबर्स अगर आपको याद है तो आप और इसमें से बहुत सारा टाइम आप बचा सकते हो। Now what we are going to do next, we are going to see some of the questions which are asked in the previous exams और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। See my dear friends, solving the questions is not important. Two things you have to keep in mind. First, how much time you are utilizing for solving that particular question and what is the accuracy level. Now if you are taking less time for solving that question and that question is not correct, then you are going to lose your marks because negative marking system is going to affect you. So if you are taking too much time to solve the question and you are getting it correct, again that is not fruitful because that utilization of too much time will hammer your number of questions solved. So these two things should go hand in hand. For that you need to develop some approaches. ट्रेडिशनल मेथड आज तक आपने जो किए हैं, जो समटाइम्स दिस मेथड्स आर लेंथी, स्टेप वाइज मेथड्स में हमें बहुत सारा टाइम लगता है, उसको हम स्किप करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो अप्रोच डेवलप करने की कोशिश ये लेक्चर्स में हम करेंगे। और जो भी हमारा एक पूरा बैच होने वाला है उस पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। Now let us take this first example. Now as far as logical reasoning is concerned, coding decoding topic is very important. Now इस coding decoding topic में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं। Now this question is displayed on your screen which says that in a certain code 256 means red color chalk, 589 means green color chalk and 254 means white color chalk. The digit in the code indicates white is. Now यहाँ पे आपको कोड देते हुए 256 एक ग्रुप ऑफ डिजिट के लिए एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है, दैट इज रेड कलर चॉक। रेड कलर चॉक, तो आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर आपको 3 डिजिट्स दिए हैं तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस में 3 वर्ड्स आए हैं। इसका मतलब एक डिजिट एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ सीक्वेंशियल लॉजिक। इसका मतलब ये मीन नहीं है कि 2 फर्स्ट नंबर पे तो उसका कोड रेड हो जाएगा, 5 2 नंबर पे उसका कोड कलर हो जाएगा, 6 3 नंबर पे उसका कलर चॉक हो जाएगा। इस तरह का लॉजिक इसमें नहीं है और वो डिसाइड करने के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। सेकंड इंफॉर्मेशन इज गिवन 589। सो 589 का मतलब होता है ग्रीन कलर चॉक, green color flower. So green color flower. Now my dear friends, you can easily observe here in the first set of digits and second set of digit 5 is common. And if you look at the sentence, in sentence में कौन सा word common है, that is color is common. So what we can conclude out of here, 5 is a code for color. But in question we are supposed to find the code for white, so we have to take the help of the third set of information, that is 254. Now 254 के लिए कोड आपको दिया गया है white color chalk. Now try to understand this. In these 3 set of digits we have 5 common, so we already allotted 5 के लिए कोड है कलर। नाउ इन बिटवीन दिस फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस 2 इज कॉमन। नाउ 2 कॉमन है तो इसमें से कौन सा वर्ड कॉमन है, तो आपको दिख रहा है चॉक कॉमन है, सो 2 इज अ कोड ऑफ चॉक। सो देयर इज ओनली 1 डिजिट लेफ्ट हियर एंड ओनली 1 वर्ड लेफ्ट हियर, सो व्हाइट के लिए डेफिनेटली 4 डिजिट यूज किया गया है। सो इन दिस पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न व्हाइट के लिए कोड हो जाएगा आपका डिजिट 4, दैट इज योर ऑप्शन बी। सो इन दिस फैशन, सो सी इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके आप यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हो। यूपीएससी सीसेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर के अंडर डाल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन इज वन ऑफ द
मीन्स फेवरेट टॉपिक एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, जिसपे कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में पूछे गए। 2011 से जब यूपीएससी ने सीसैट लेना शुरू किया है, वहां से लेके 2019 तक we observe that there are 3-4 questions which are likely asked on blood relation. One question is given here on blood relation. We can put this particular question under the coded relation category. कोडेड रिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दिए गया है कि a प्लस बी अगर है तो इसका मतलब ये होता है a is a son of b. A is son of b. तो हमेशा हमें याद करना है कि जब भी हम कोई नेक्स्ट जनरेशन हम दिखाएंगे तो ये डाउनवर्ड एरो हमें दिखाना पड़ता है। एंड एज फार एज सॉल्विंग द ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, वी हैव टू डिसाइड जेंडर पार्ट। सो व्हेनेवर यू वांट टू शो द मेल पार्टनर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वी आर गोइंग टू यूज स्क्वायर बॉक्स, और आपको अगर फीमेल अगर शो करना है तो वी आर गोइंग टू यूज circle. Now, since A is the son of B, so we can write in this fashion. Now, the information about A is given. A is the son of B. So, we don't know whether B is a mother or father of B. Unless and until उसके related कोई information नहीं है, तो हमें कुछ guess करना नहीं है. Second, आपको symbol दिया हुआ है A minus B. इसका मतलब ये होता है कि A is a wife of B. Now A is a wife, that A must be the female and B must be the male, and to show the married couple we are going to use this parallel line. So this is parallel line is used for married couple. Now this is the information given. So दो अल्फाबेट्स के बीच में अगर प्लस साइन आता है तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन इज अ सन ऑफ सेकंड पर्सन। अगर उनके बीच में नेगेटिव साइन आता है तो फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ अ सेकंड पर्सन। ऑन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिसाइड P प्लस R माइनस Q इसके रिलेटेड, दिस एक्सप्रेशन रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग statement is definitely true. Now if we decode this, if you prepare a tree diagram for this particular expression, so what we will get, P is a son of R, P is a son of R, and R is a wife of Q. R is a wife of Q. It means that P is a son of R and Q, where R is a mother and Q is a father. Now let us go to the option. First option is Q is a son of P. No, that is not true because Q is a father of P. Second is Q is a wife of P. No, Q is a husband of R. So that is again false. Q is a father of P. Q is a father of P. This statement is definitely true. So whenever we come across the questions on coded relation, it is very advisable to draw the proper tree diagram. And there are certain notations we can use for solving the problems based on tree diagram. यही notations use करना कोई mandatory नहीं है. We can have different set of notations also, but these are the most convenient to use. That's why we used to have this square box for the male, circle for the female, parallel line for the married couple, downward arrow for the next generation. Again, this question was asked in UPSC CSAT 2018 exam. This is the next question which was asked in 2019 exam. यहाँ पे आपको कुछ square box में numbers दिए गए हैं. Screen पे आपका question है. I request everyone to pause that video or pause that screen or to think over this particular question for a seconds, and then we will discuss the answer of this question. स्क्रीन पे आप पे क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको रीअरेंज किए हुए हैं. These are arranged according to the certain rule. We have to decode that rule. I already told you, my dear friends, if you are good at squares, if you are good at numbers, if you are good at tables and cubes, you can definitely able to crack the logic in minimum time. Now यहाँ पे 3 और 6 का pairing दिया हुआ है. Now all of you know that what is the square of 3? Square of 3 minus 3. अगर आपने ऐसा किया तो you are going to get a 6. Square of 3 is nothing but 9. 9 minus 3, that is 6. So what they are doing, जो upper row में जो नंबर दिया हुआ है, अब वो जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर किया है और उसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट किया. For example 8. Now here 8 square minus 8. 8 square होता है 64. 64 minus 8, that is 56 is given.
so we can get 56 there. Now next is 10 और यहाँ पे 90 दिया है. What is the square of 10? Square of 10 is 100 minus 10, that is 90. Next is 4 and 2. So 2 square is 4, 4 minus 2, that is 2. 1 square, that is 1 minus 1, that is 0. So आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और नीचे आपको 20 दिया है. So this question mark must be replaced by 5 because 5 square minus 5 that is equal to 20. 5 square होता है 25 minus 5 that is 20. So answer of this question is option A. See my dear friends, if you're good at squares, you can easily answer this question in minimum time. So lot of confidence and energy you will get out of this particular question, and we can utilize that time, confidence and energy for solving the little bit difficult question or moderate level question. So that should be the approach for solving the question. Let us discuss the next question. Now here on the screen I have given you one question which was asked in UPSC 2019 question paper. So I am waiting for your responses. So here is the number series. Now number series में आपको एक number missing है which is shown by X and the remaining numbers are given. Now these numbers are arranged according to the certain pattern. Now we have to figure out that pattern. ये pattern कौन सा है? ये pattern आपको ढूंढना है. Now जो numbers आपको दिए गए हैं उसमें कौन सा किस तरह से increment हो रहा है? Now यहाँ पे अगर आप देखते हो this number is increased by 12. Now if you observe this number is increased by 10. So 10 and 12 these are consecutive even numbers. So out of this we can roughly guess so previous increment must be 8 और इसका previous increment 6 होगा, so that we can get certain pattern plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. If you apply the same logic, 7 plus 6 that should be what, 13, and if I plug in 13 here, 13 plus 8 I'm getting 21 here. So my logic is absolutely correct. So instead of X, so X should be replaced by 13 and that is your answer, option C. So see, look at this question my dear friends. This is a very simple question. If you know the numbers, if you work with the numbers, even number, odd number, prime numbers, composite numbers में अगर आपने अच्छा काम रहा, numbers पे अच्छा hold रहा, so you can crack this particular question. Very easy question that was asked in UPSC 2019 question paper. Now this is the question which is based on the non-verbal reasoning. Look at this question जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है. नॉन वर्बल रीजनिंग पे यहाँ पे अगर आप एनालिसिस करते हो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स का, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग. इट माइट मींस कंप्लीट द सीरीज, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीट द डायग्राम, then a mirror image, water image, this kind of questions are asked on in the non-verbal reasoning category. Now in this particular question set, now we have to find the correct figure in place of question mark. Now for that we have to figure out the rule by which the previous symbols are arranged. Now look at the first symbol, that is triangle. Now if you look at the triangle movement, this triangle is moving in a clockwise position. Clockwise position में मूव करते हुए वो अपना 180 डिग्री में टर्न हो रहा है. So it is turning in 180 degree. So it moves from this place. So this is the diagram. This is the diagram. Okay. So this place to this place. So this place. So this is 180 degree movement. Then again it comes to this place. So this one place clockwise. So what should be the expected? Now यहाँ से तो वो फिर यहाँ पे आ जाएगा. Now we want that triangle here, and that should be in 180 degree movement by happening the 180 degree movement. So our triangle position must be like that. Now look at the options and eliminate the options. So on that basis we can eliminate C and D option. So elimination process, elimination method. This is one of the important method when you are appearing for any competitive exam, my dear friends. Eliminate the wrong options. We eliminated the C and D option. Now look at this symbol. Now this symbol is moving in anti-clockwise position. यहाँ से यहाँ पे आ गया. Now यहाँ से यहाँ पे anti-clockwise position में जा रहा है. Now next यहाँ पे आ रहा है.
Now from this again it will gain to this position. Now look at the options. Now out of this A and B, which are the option left after eliminating C and D, in between A and B, only in option A and B we are getting this kind of situation. So answer of this particular question will be answer A. So whenever you are solving the questions on non-verbal reasoning, elimination process is the best process, because, or best method I will say. Because if you take all options in consideration, sometimes it will take you too much time. कंफ्यूज हो जाओगे आप और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 5-6 मिनट्स कहाँ पे चले गए. Because as far as exams is concerned, this time slips faster than water. 5-6 मिनट्स कहाँ पे चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और उसके बाद बहुत सारा confusion होता है. So when you are solving the questions on non-verbal reasoning, means questions related to diagrams, always go with the options, eliminate the wrong options, and you can find your answer in minimum time. Similarly, non-verbal reasoning का एक question मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको there are some parts of the diagrams are given, and by joining those parts, which diagram will be formed, that diagram you have to choose it from the options. So यहाँ पे आपको एक diagram बनाना है. Now this is very simple question. Again, if you look at the 4 parts of this diagram, and if you immediately come to the options, then you will find that their option D. Now यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से observation करना पड़ेगा. Now option B and D are very similar, but out of this B and D, correct option is D, because that line is slanting line in option B, but that line means we require two rectangles, but that is not formed in option B. So correct option of this particular question is option B. So minute observation is required when you are solving this question. My dear friends, if you have practice of doing this, you can able to crack this particular question type questions in 15-20 seconds. And ideally, you must take 1 minute to solve the question as far as competitive exam or CSAT exam is concerned. But when you are solving the question in 10-15 seconds, you are saving lot of time. And that saved time can be allotted for the difficult question, and that should be the approach when you are solving the questions in the paper like CSAT. Okay, my dear friends, now we are going to discuss the questions on basic numeracy and data interpretation. Now, as I told you, in 2019-18 question paper, if you analyze that particular question papers thoroughly, then you will find that there are 30 to 34 questions are likely to be asked on basic numeracy. And as far as syllabus of basic numeracy is concerned, the maths up to class 10, the questions are based on the maths up to class 10. और जो हमने 10th क्लास तक का मैथ्स पढ़ा है उस पे ही क्वेश्चंस हमें आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल्स, देन इंडाइसेस, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शंस, average, ratio proportion. Again I will say ratio proportion is a very important topic when you are solving the aptitude test or CSAT paper. Then there are the papers, the questions on problems on trains, problems on boats and streams, pipe and cistern, time and work, permutation, combinations and probability. So there are different kinds of questions. I mean, these type you already studied up to your class 10. Probability आपका 10th class में हो गया है. टाइम प्रॉफिट लॉस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज. These are very crucial topics for this CSAT paper. Now let us discuss what are the different questions or different questions asked in previous exam papers and what should be the approach for solving those questions. Now here is one example given. This example says that a 2-digit number is reversed and the larger number is divided by a smaller number. Then what is the largest possible remainder? What is the largest possible remainder? Now if you look at the option, largest possible remainder पूछा हुआ है. Now आपको अगर क्वेश्चन के ऑप्शन से अगर हिंट लगाना है, if you look at the option, all the options are multiple of 9. 9, 27, 36 and 45, and out of these 9, 27, 36 and 45, largest number is 45 and answer is 45, my dear friends. You must be surprised to know this. How we got this number 45. Always remember, when you are getting any 2-digit or when you take any 2-digit number और उसके numbers के अगर आप reverse करते हो तो
जो भी नंबर्स आते हैं वो उनका सम अगर आप लेते हो, दैट सम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, एंड अगर आप डिफरेंस अगर लेते हो, दैट डिफरेंस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। डिफरेंस अगर आप लेते हो तो मल्टीपल ऑफ 9 यहां पे लेते हो। और ऑप्शंस में 9 का सबसे बड़ा मल्टीपल अगर आप देखते हो तो दैट इज 45, सो योर आंसर इज 45 एंड दैट नंबर इज 49। 49 को अगर आप रिवर्स करते हो तो आपको मिलेगा 94, एंड व्हेन 94 इज डिवाइडेड बाय 49 यू विल गेट रिमाइंडर as 45. So this is the largest possible. 9 is possible, 27 is possible, 36 is also possible, but we require largest possible. So largest possible remainder is 45, which is option D. So this question is based on number system. Numbers का अगर basic knowledge भी अगर आपको है, ये rules अगर आप पहले से पता है, तो आप immediately you can answer this particular question. So number system plays very important role. Number system पे हमने देखा है कि कम से कम 5-6 questions number system पे पूछे जाते हैं. So number system अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो ये 5-6 क्वेश्चंस में there are 4-5 questions are having moderate difficulty level which can be solved in minimum time. Now second question यहाँ पे है. Now this question is a combination of permutation, combination and number system. How many numbers are there between 99 and 1000? Now look at this range between 99 and 1000. That means they are asking us to find 3-digit number because 99 के आगे नंबर आता है 100 और 1000 के बिलो नंबर आता है 999. So we supposed to find how many 3-digit number. That means that how many numbers between 99 and 1000 such that 8 occupies the unit digit. यूनिट डिजिट पे आपको 8 आना चाहिए. ऐसे कितने नंबर से जो 99 और 1000 के बीच में है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया आप 99 और 1000 के बीच के नंबर अगर ढूंढ रहे हैं, सो दोज नंबर्स आर 3-digit numbers. Those numbers are 3-digit numbers. Now यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है यूनिट प्लेस ये 8 से ही फिलअप होना चाहिए. Now if I want 8 in a unit place, so this can be filled only in one way. Now when I am filling this place, अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये 2 प्लेसेस भी फिल करने पड़ेंगे, और अगर मुझे ये प्लेस फिल करना है तो मैं इसके लिए 9 डिजिट्स यूज कर सकता हूं. और वो 9 डिजिट कौन से है? 1 to 9. I cannot use 0 here क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 अगर यूज कर लिया तो वो नंबर 99 के नीचे चला जाएगा. And I want the numbers between 99 and 1000. So we cannot fill this place by 0. Okay. Now यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो ये प्लेस मैं 10 डिजिट से फिल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं 0 भी रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं 8 भी रख सकता हूँ. एंड एज पर एज रूल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का रूल यूज करके हम इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब वेज का. सो 9 into 10 that is equal to 90. So there are 90 such numbers between 99 to 1000 whose unit place is 8, which is your answer option C. So again this question is on number series, number system, my dear friends. Let us discuss the question on pipe and cistern which was asked in CSAT 2018. See, I already told you the basic knowledge of the maths is very required. LCM, SCF is one of the very important topic in your maths. Okay, जो हम 6-7 standard में पढ़े हैं. Now, using the applications of basic numeracy or LCM, you can solve the questions on pipe and cistern and time and work. जैसे next question मैंने आप डिस्प्ले किया है स्क्रीन पे. 2 pipes A and B can independently fill the tank. Both are filling the tank in 20 and 30 minutes respectively. If both pipes are open simultaneously, then how much time they will take to fill the tank completely? ऐसा पूछा हुआ है. माने क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक टैंक है जिसको 2 पाइप्स फिलिंग के लिए लगा है. लेट अस कॉल दिस एज A and B. इसको 20 मिनट्स लग रहे हैं. ये अकेला अगर फिल करता है तो, ये अगर अकेला फिल कर रहा है तो इसको 30 मिनट्स लग रहे हैं.
But in the problem situation, they are supposed to find the time if both are open simultaneously. Now, how we can solve this question? See, A and B both are inlet pipes. Okay, so I have written plus sign because they are filling the water. So that's why they are adding the water. So I written plus sign here. So ये 20 मिनट्स में भर रहा है, ये 30 मिनट्स में भर रहा है. मैंने इन दोनों का LCM ले लिया. So I divided this time in 60 parts. Try to understand this. Okay, I have taken the LCM of this. 20 and 30 का LCM हो जाता है 60. Because this is the least common multiple of 20 and 30. Now अगर हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 1 मिनट में कितना फील करता होगा. इसको 60 पार्ट फिल करने के लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये 1 मिनट में 3 पार्ट फिल करेगा. इसको ये पूरा 60 पार्ट्स 30 मिनट्स में फिल कर रहा है. दैट मींस एक पार्ट फिल करने 1 मिनट में वो 2 पार्ट फिल करेगा. So try to understand this. This A can fill 3 parts in 1 minute and B can fill 2 parts in 1 minute. So what is our, means we are trying to get 60 here. 20 into 3 that is 60, 30 into 2 that is 60. That's it. Okay. So if these both are working together, ये 3 पार्ट फिल कर रहा है, ये 3 पार्ट फिल कर रहा है और इसने 2 पार्ट फिल कर दिए. In 1 minute they are filling 5 parts. In 1 minute they are filling 5 parts and they have to fill how many parts? 60 parts. So our answer is 60 divided by 5, that is 12 minutes. So if both pipes open simultaneously, they will require 12 minutes to fill the tank completely. My dear friends, since if you are not aware about this particular topic, it seems little bit difficult to you, but if you try to understand this, if you solve this question by using LCM method, this is the simplest question as far as your LCM method is concerned. There are different methods to solve this question, but उससे थोड़ा सा lengthy होगा और complicated भी होने के chances ज़्यादा हैं. यहाँ पे next question दिया है, which is on that is ratio proportion. Now ratio proportion पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. Now the monthly income of Peter and Paul are in ratio 4:3. Now monthly income of Peter and Paul. Peter and Paul का monthly income आपको दिया है 4:3 रेशियो में. माने जो भी इनकम आपका Peter का होगा that will be multiple of 4 और Paul का जो भी इनकम होगा that will be multiple of 3. So I request everyone to think of this particular question for a while and then we will discuss the answer of this question. I request everyone to think over this question and try to take the help of option so that you can eliminate some of the wrong options and you try to get the answer. Okay friends, how many of you got the answer? Please write in comment. Give me your answer in comment box. Okay. Now, what should be the approach for solving this question? See, Peter और Paul के जो income है उनका ratio 4:3. So what I will do, I will go for that option in which the first number is multiple of 4 and second number is multiple of 3, because question is asking you to find their monthly income. If you look at option number D, जिसमें Peter का income 34,000 दिया है और Paul का income 26,000 दिया है, these two numbers are not multiples of 4 and 3 respectively, so D cannot be our answer. So option D तो eliminate हो गया. Now there are possible options A, B and C. One option we eliminated only on the basis of the numbers. 4 का multiple और 3 का multiple. Now क्या दिया है next? Their expenses are in ratio 3:4 and everyone is saving 6,000 rupees. Now my dear friends, income के लिए हम ये equation लिख सकते हैं. Income is equal to expenses minus saving. माने अगर मैंने इनकम में से सेविंग अगर सब्सट्रैक्ट कर दिए, इनकम एक्सपेंसेस में से मैंने सेविंग सब्सट्रैक्ट कर दी, सॉरी ये एडिशन है, दिस इज एडिशन, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग. इनकम में से मैंने अगर सेविंग ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिए तो मिलेगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस दिस इज इनकम रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो इज गिवन एज 3:2. It means that if I took first option as my answer, 24,000 and 18,000,
इसमें से अगर मैं 6000 घटा देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में से अगर मैं 6000 घटा देता हूँ तो मुझे मिलेगा 18,000 and 12,000. And if I simplify this further, I am getting this ratio. If I simplify this further, this is 6 3s are and 6 2s are, I am getting 3:2. So all conditions satisfied. So my answer must be 24,000 and 84,000. If you check the other options, you are not getting that condition satisfied. Because 28,000 में से 6,000 अगर आप subtract करते तो मिल रहा है 22,000, which is not a multiple of 3. 32,000 में से अगर आप 6,000 subtract कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 26,000, again which is not a multiple of 3. So only one option is satisfying that all options, all conditions, that is option number 1. So we are not solving this question here by stepwise method. We are just checking it with the help of options, taking the option in consideration and satisfying all the conditions given in the problem. So that approach is required in the exam like UPSC CSAT. Here is the last question, my dear friends, and this question is on time and work. Now time and work में आपको यहाँ पे question पूछा गया है. Now again this is a combination of two topics, that is time and work, time, speed and work, and average. Two cities A and B are 360 kilometers apart. A car goes from A to B at 40 kilometers per hour, and from B to A returns at 60 kilometers per hour. What is the average speed of a car? Now, prima facie, what we think, when we are supposed to find the average speed, immediately we take these two speeds, or 60 plus 40 divided by 2, 100 divided by 2, that is 50, or 50 options में दिया हुआ है, which is the wrong answer. Why it is the wrong answer? Because here that person is traveling from A to B 360 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर से आने का भी डिस्टेंस 360 किलोमीटर है. सो दोनों जगह पे उसका डिस्टेंस सेम है. When distance is same, your average speed is calculated as average speed is equal to 2 times S1 S2 divided by S1 plus S2. So this is the formula which is used for finding the average speed in case of two equal distances. और यहाँ पे S1 और S2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है. S1 और S2 का वैल्यू दिया है 60 and 40. If you plug in the values 2 into 60 into 40 divided by 60 plus 40 100, if you simplify this, you will get 48 as your answer, which is option number 2. So this question, अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं, सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 50 आपका आंसर आ सकता है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है. सो आपका आंसर तो सही तो नहीं आएगा, गलत आएगा, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम मिलेगा. सो वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, एंड इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग, देन यू कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. So these are the type of the questions which are likely to be asked on the basic numeracy and data interpretation. And last section, my dear friend, decision making and problem solving. This topic is very important because as far as administrative services are concerned, you have to take some decisions at time, and that's why you should have an ability to take the decisions, and these questions are asked to check your decision making power. And for the decision making questions, there is no negative marking system. That is the best part about these particular questions. So decision making questions again require reading skill, comprehension skill. You have to understand that particular situation very correctly, thoroughly, so that you can able to take the good decisions. Okay, so this is all about UPSC CSAT, my dear friends, which is, this paper is in a qualifying nature. We have to score 33.33%, that means 67 marks out of 200 marks. And if you go by this particular approach, if you solve it for, means if you practice it for 45 minutes daily, if you read through proper books and editorial pages of Hindu and Indian Express, definitely you will get more than 67 marks in this particular paper, and you will get qualified for this prelims exam. I request everyone, if you have some queries and doubts about this particular session or particular topic, CSAT में से लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी का कोई भी आपको अगर कोई डिफिकल्टी है, I request everyone to comment it in a comment box. We will come up with the solutions of those difficulties shortly. So that's all from my side, my dear friends. I request everyone to join this class because
This will going to improve your all skill, reading skill, mathematical skills, calculation skill, your logical reasoning skills. Because see, practice makes man perfect, and continuation is a mother of mastery. If you do the things in a proper way, under the proper guidance, then you will definitely get the success. On this note, I will wrap up this session. Thank you very much.